मेज को उठाने वाले। उधर ही था। क्या बात कर रहे हो? इन पेला मेज को कैसे उठा रहे हो भाई तुम? शर्म वरम नहीं आती है बोलते हुए सब? बस यार क्या करें, जल रहे हैं अपने। वो तो है। हो गया, फ्लिकर फट गई। डैमेज बनाने का मन कर रहा है, लिस्ट ग्रो डालूं। डाल ही देता हूँ, इतना पैसा लगा दिया इस टाइप बंदे को। दे रहा हूँ, 1 घंटे से ट्राई हार्ड कर रहा है भाई, एक आइटम आया उसके हाथ में। जाएगा क्या? निपट जाएगा शायद, दिक्कत नहीं है। आई ये ओके ना। हमारी मेज सस्टेन बना दी, ओपन कर भाई, समझदार मेज है। नॉट एवरी डे यू गेट सच हाई लो। ले थोड़ा कांड। We're way behind schedule. Next on the agenda. We're way behind schedule. हो भाई, ये कहाँ गए? भूपिंदर कहाँ चला गया? गया वो घर भाई पे। यार फिर साला बच गया जरा से। अरे यार क्रिस्पी यार, तुम भाग जाते हो बिना बताए। लाइट जाती है, मैं क्या करूँ? अरे इसको पकड़ साले को। यार इन्वर्टर से थोड़ी देर तो चलवाओ यार, यूपीएस लो, तुम्हें कब बोला है? अभी मैंने बोला भी था, हाँ। अमेजोन की सेल आई हुई है। तुम यार बड़े दल्ले हो। यूपीएस और पीसी। अरे कोई हमारा टावर लॉकर नहीं है क्या? टावर लॉकर नहीं है भाई नोबडी केयर टावर। एमएम था, क्या कर रहा था, कैसे मरा एमएम? कितने वॉट आवर का यूपीएस काम करेगा अभिषेक? क्या पता। अभी जो रखा था वो कितने वॉट आवर का था? पता नहीं, मुझे याद नहीं है, काफी टाइम हो एसएमपीएस गया ना। कितनी पावर खींचता है? ये भी नहीं पता। भाई मैं दूसरी बार मरा हूँ, मेरी टीम 9 5 8 8 बताओ। क्या बात कर रहे हो? हाँ ये भी तो लगे। यही बहन की है दरवेश के। लौट जाए भाड़ में, इसको तरफ को बेस कर दिया, एक एचपी। मैं फुल डैमेज दिया तो मैं उससे मिल दूंगा। हार्ली सिंगल टारगेट है, ब्रूनो सिंगल टारगेट है, वक्सान हमारी टैंक बनी घूम रही है डैमेज। एक एंटी हील बनाया उसने, पता नहीं किसके लिए।
ब्रो। अच्छा एक साथ तीनों करने पड़ेंगे। ब्रूनो को भी डैमेज नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। मैं डर रहा है। तो नहीं इसको मार दिया मैंने तो। ये ड्रॉप हो गया डाइट का फुकन आराम करो। अरे इसके लगाना था एक चमाट। अबे यार बच भी चल। मैंने छोड़ दिया। एमएम कैसे मार रहा है? यार ये मेरा पूरा कुछ फिर से करना पड़ेगा, क्या मजाक बना के रखा है भाई। रहने देना, दूसरी चीजें कर ले, वर्ल्ड क्वेस्ट कर ले। अरे नहीं नहीं, मुझे कमीशन इसके खोलने हैं ना। तो वो क्वेस्ट जो है वो आईपैड पे कर लो तुम। क्या करना, अब इसी पे कर लूंगा मैं। लाइट की दिक्कत है ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अरे क्या पता आईपैड पे नहीं पड़े जाए। पड़े बढ़िया बढ़िया सो जाना। नहीं नहीं, ये बहुत बड़ा नहीं है, ये 5 से 10 मिनट एक लगेंगे मिनट इसको एक पूरा मिनट करने में बस। क्या भर भर के थ्रो कर रहा है भाई हमारी टीम। ये गया प्लेन शॉट का। लेकिन मेरे को दिया गया। तो मैंने दिखा दिया। Shine down. Rest and revamp. तो होगा मैंने जिसको निकालने के लिए देखिए चल के बताओ। देख मैं ब्रूनो गुफा में वो तो लगी। Is it because of this mechanism in the middle? That guy really prepared a lot of stuff for this place. Paimon thinks we need to go up, but हाँ भाई बाहर में doesn't see a पूरा way. डैमेज लेने हेलो वाला। Let's take a look हम around. भी कर रहे हैं। Maybe we'll find a hidden mechanism that'll show us the way up. ये मिनियन दिख गया। Scatter! The water level is rising. Now we can swim to the top. But this is still a ways away from where कहाँ we अबे need to go. साला इन्होंने को बैठ। यार सरेंडर। Illusion shattered. Everyone hold hands. Shine down. भाई इजी गेम का हारे हैं बताओ। Let's move out. लापो से कितना ही भाई लेट गेम में कोई था ही नहीं। ब्रूनो गूप आ रहा है इम्यूनिटी नहीं बनाई भर भर मर रहा। वेक्साना फुल टैंक जा रही है 5 आइटम टैंक है। जॉहेड फुल टैंक। हार्डली एक को मारने का मतलब 9 10 7 6 6 11 2 12। Now the path is उसमें भी भाई clear. Let's सबसे कम go. डेथ में सबसे हाईएस्ट डैमेज मैंने ही टैंक किया है। ना जॉहेड ने जो फुल टैंक है ये टैंक ना वेक्साना ने जो फुल टैंक है। हाईएस्ट डैमेज भी मेरे है। व्हाट द फक। नाइस। Illusion shattered. मिलते हैं बाद में। ये इन लोग सब खेलने ये सब थोड़ा खाने पीने बाद में खेलें। कोई मिलते हैं लंच के बाद। गुड नाइट। I see everything. Inazuma shines eternal. Hey! Let's move out. Allow me.
it! The mastermind isn't here. That's right. Then let's hurry up and find some evidence so we can get back to the Opera House and help Navia. Whoa! There's so much synth here! And so many bottles of ingredients that probably just contain the waters of the primordial sea. Mixing in progress? Ready to drink? Stock sample? Huh. They've also got all the synth pretty clearly labeled. Whoa! There's even fruit-flavored synth? Yep, it's super obvious. What's this over here? Looks like some kind of place for research. Experiment number 16 aims to verify Jacob Ingold's research conclusions on the primordial sea and use his theory as a foundation to achieve a breakthrough. The experiment was a failure. No individual managed to resurface from the water from the primordial sea. Female specimens 22, 23, and 24 were dissolved. Sorry, Traveler. Paimon will try her best. It's just that Paimon's never read something so scary before. How can someone write something that terrible in such a matter-of-fact tone? You read the rest. Paimon's too scared to keep going. So that's why he did all of these experiments. But did he really think he'd be able to find a way just by dissolving people over and over? That's just insane! Huh? Isn't that the name you heard by the fountain? Paimon thought he was an eyewitness in the serial disappearances case. You mean Vache is the one who did all of these... experiments? So that's it! Vache was no victim, but personally took his lover and... No, that's not it either! If that's the case, why would he want people to resurface from the water? In any case, Paimon will write it all down. What's written here? Nothing escapes Detective Paimon's eyes. Callus. Navia's father. Oh, this seems to be an investigation report on him. Yep. It's about finding someone to assassinate Jacques and Callus because of a lack of confidence that Jacques himself would go through with it. This should prove the existence of the third person, right? We still have not determined the exact content of the key information Callus has passed on to certain members of his organization. The old dog's a real menace to deal with. Even if he abides by the promise he's made to us, he will still have the upper hand. He can act whenever he wants to make our lives miserable. The only option left is to remove him from the picture entirely. I concur. Let's send someone to kill him. He won't declare war as long as we don't touch Navia. Oh, seems like we've got a bunch of correspondence between the higher-ups. Oh, they're all just so evil. Here, and it's full of water. That means this is where they make all the synth. And that special water is the main ingredient. If you dilute it with normal water, you'll get synth. But the pure stuff can dissolve a human. Paimon will take notes of this incriminating evidence. Hello. क्या
ऐसे धकेले धकेले क्या What's all this? Aw, it's a bunch of कैंसर really cute अपडेट है things. भाई. Pink accessories, a hair tie, a शर्म आनी necklace, चाहिए. even a शर्म makeup शर्म box. शर्म आनी चाहिए. शर्म शर्म. Oh, क्या Paimon sees it too, but why are all these cute things labeled with different girls' Huh? You mean the girls from the serial disappearances? They were brought here? And then they were turned into water, and all the boxes of things. These names. That means... Oh, this is terrible! We've looked at almost everything here, and it seems like our theories were spot on. Yeah, we haven't found anything that reveals his true identity. No wonder even Nervalette wasn't able to find anything. Whoever it is probably destroyed everything to do with that name a long time ago. That way, even if we bring all this back to the opera, we won't be able to identify the true culprit. Sure thing. Paimon won't admit defeat to this guy either. You take that side and Paimon will take this side. Check everything carefully. We'll find something for sure. Ugh. Nothing at all. And Paimon can't even find snacks either. Whoa, really? Let Paimon see. Vinier. Isn't that Vache's lover's name? Then you found her diary. Let's see. Aw, it's just a normal diary chronicling their love story. She was so sweet too. Oh, Paimon feels even worse for her now. So many! A whole page's worth! But they're all crossed out. Was she unhappy with all of them? The final name she decided on was Marcel. Wait, but Marcel's pretty old. Has this case been going on for so long that he's Vache and Vinier's grown son? Hey! Paimon still hasn't figured it out yet. And whose image do you see, Marcel? Is it a man named Vache? Huh. Oh, so you do know that name. I'm merely surprised you'd suddenly say the name of someone I've never... I was waiting for you to say that. Navia! We're back! As expected of my partner. I just knew you'd return in the nick of time. Just how often do you intend to flout the rules of this court? It's all right, Monsieur Nervalette. Given their confidence, I expect they've found the crucial evidence. But the truth of it, Marcel, is that you've always been Vache. Huh?
We've investigated your lair and we already know everything! After your lover, Veneer, was dissolved, you kept abducting young women to experiment on the hopes of bringing her back to you. You even created Marcel as a new identity and destroyed all records of your past as Vache. So that's it. Even the villains in opera performances rarely go that far. And with that, Marcel's motive has now been established. This information regarding your past also dismantles your prior timing defense. Well, Marcel, do you know where you went wrong? You fixated your gaze on the lover that passed away, instead of paying attention to the living people around you. So, you never noticed how we changed, or how we grew as individuals. You also never understood Boss's real expectations for his daughter. Or our determination to see things through. Your determination. Mr. Marcel, please speak up now if you would like to defend yourself. Otherwise, the trial will move on to the next stage. Do you really think I wanted to do any of this? Pay attention to you? What for? Have you ever paid attention to me? Ever empathized with my pain? Ever known how it feels to watch the love of your life dissolve right in front of your eyes? No one helped me. No one even believed me. All those decades ago, even the officers from the Maison Gardiennage were laughing at me. They said there's no way a human being can turn into water. So I must have gone mad from grief. Vinier's death was brushed away by all of you as if it didn't matter at all. Well, now you know, don't you? Ha! Well, it's too late now. All those who were dissolved are gone forever. You only have yourselves to blame. You set up this ornate opera house in pursuit of your so-called justice, your beloved drama, while turning a blind eye to the suffering of the people. Venier is dead. We promised each other that we would always be together. Wherever she goes, I will follow. But I'm not from this blasted place, so I can't be dissolved, no matter what I do. Hey, is that water from the primordial sea that he's drinking? I can't dissolve! Can't dissolve! Can't dissolve! Do you all see? I can't go! I can't follow! So if I can't go where she is, what choice do I have but to try to bring her back? I did all of that, and in the end, that accursed Callus still got the better of me. I spent my entire life living on pins and needles, only to get stabbed by his idiot daughter at the very end. The suspect is exhibiting signs of mental distress. Guards, please restrain him. Don't touch me! Don't anybody come near me! I still need to save Venier. I promise. We made a promise. Venier, please, Venier. Don't think badly of me. All I want to do is fulfill our promise. At this point, the verdict of this trial is clear. With Mr. Marcel's conviction, the charges against Mr. Tartaglia no longer have any basis. Fine by me. I was in a bad mood, but after a show like that, I'm actually feeling pretty good. Traveler, please submit all the evidence you have collected to the guards, so that I might review and summarize the truth behind the serial disappearances case. The man now known as Marcel was originally named Vache, and worked as an adventurer with his partner and lover Venier. During an underwater expedition, Venier accidentally came into contact with water from the primordial sea, and was dissolved in front of Vache as a result. Vache learned of the primordial water's existence through the work of others, and began to kidnap young women for research, with the goal of discovering a method to restore Venier back to life. To cover his tracks, he invented the new alias of Marcel, and began to operate a business in Poisson. During the course of his research, Vache discovered that a diluted concoction of water from the primordial sea can induce feelings of euphoria, and began to manufacture and market synth.
However, as he accumulated wealth to fund his continued research and expanded the scope, he came into conflict with Spina di Rasula. After exchanging blows with Spina di Rasula for many years, Vache decided to assassinate their president Callus at a banquet. Although the assassination did not go as Vache expected, he was able to turn Callus into the murder suspect by dissolving the assassin he sent to the scene. And just recently, Vache attempted to frame Linny as the culprit of the serial disappearances case, using a similar method. However, his attempt to frame Linny failed, and the power of water from the primordial sea became public knowledge. This case also exposed enough of Vache's machinations that he was eventually successfully charged in court. Thus concludes the enigmatic history of the serial disappearances case, with the truth revealed to all. The Oratrice will now deliver the final verdict regarding the charges against Mr. Vache. According to the judgment of the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinale, Mr. Vache is guilty. Guards! Take Vache away. Good. It's what he deserves. With that, the serial disappearances case is over now. We really just witnessed history. Who would have thought the true culprit would be such a polite and well-spoken guy? Yippee! We helped Navia bring the bad guy to justice! He's hurt so many innocent people and now he's finally getting what he deserves. Huh? Are you okay? Demoiselle, you were absolutely brilliant. The day our late boss had always hoped for has finally come. You can rest easy now, knowing justice has been served. Yeah. Yeah. It's finally over. It's all thanks to you guys. And my partner. See, Papa? Spina di Rosula's still doing well with me at the helm. Well now, hasn't this been a most delicious piece of drama? The villain has been caught, justice has been served, past wrongs have been righted, and it's a big ol' happy ending. Since it's been such a great show, I'll just let the false accusations against me slide. Either way, I've still got some business to attend to. So, if you'll excuse me... Please wait just one moment, Mr. Tartaglia. What now? None of this has anything to do with me. According to court protocol, since this trial was initiated due to a charge against you, a verdict must also be made regarding the initial charge before the trial can conclude. Oh, come on. Is this really necessary? Haven't you already caught the real criminal? Isn't it time for side characters like me to exit stage left? Please respect the laws of Fontaine. This has always been the rule. All right, but this sure is a lot of hassle. All I need to do is stand over there, right? Let's just get this over with. Through evidence presented in the public trial that was just held, it has been established that Mr. Tartaglia has no direct connection to the serial disappearances case. The guilty party has been identified, and thus it is logical to suppose Mr. Tartaglia is innocent of the charges. We now turn to the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinale to render the final verdict on the charges. According to the judgment of the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinale, Mr. Tartaglia is guilty. What? Hey! That's not funny! Didn't you just say I'm supposed to be innocent? What's with this verdict? Is your justice machine malfunctioning? Huh? This has never happened before. The Oratrice actually returned a different verdict from the Chief Justice. I mean, have you ever heard of an innocent Fatui Harbinger? Do you think the Oratrice might have just convicted him on general principle? But weren't the charges about the serial disappearances case? No matter what else he's guilty of, it shouldn't affect the verdict in this case, right? The judgment of the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinale is, by law, the final verdict of the court. We must accept the guilty verdict. Guards, please take the suspect into custody per court protocol.
So this is how justice is done in Fontaine. What a joke. You've got your rules. Well, I've got mine too! I am sorry. If you have been wronged, we will find the truth. But the rules of the court must be upheld. Hey, Monsieur Novelette, what's going on? Shouldn't they have been cleared already? Apologies. This is also the first time I've encountered such a situation. However, according to the rules established at the conception of Fontaine's court system, the Oratrice's judgment is the final verdict of the court. All I do is follow court procedure. As for why the Oratrice arrived at the conclusion it did, you should probably ask someone more knowledgeable than me. Why are you looking at me? I had nothing to do with it! I don't know what happened there either! Hey, stop staring at me! What does Lady Farina mean by that? She says she has no idea either, but that's impossible. Didn't she create the Oratrice herself? Yeah, so are the verdicts reliable or not? Can results like this really be called justice? My dearest citizens, did you really think we'd allow an incorrect verdict to be handed out in this court? Did you really believe that the judgment could be mistaken or be the result of some sort of random mishap? Don't tell me. You thought even I had been blindsided by the Oratrice's result. But the way she looked just now, it was pretty obvious she had no idea what was going on. However, given the state of things, I shall give you an explanation. Everything that just took place, including my supposed shock and bafflement, was a part of an elaborate performance, with every action meant to stir up drama and excitement. And, of course, for every performance, there is a script. Everything has unfolded exactly as I expected from the very beginning. As the embodiment of the very concept of justice, if you thought Child had nothing to do with the serial disappearances case, it is only because you've been blinded by the superficial appearance of innocence. Everything he's done, not to mention the danger he poses, are beyond ordinary comprehension and completely unforgivable. All shall be revealed in time. You will come to understand my noble intentions, as well as the absolute correctness of the Oratrice's verdict. Now, having said that, although I hate to leave things hanging in suspense, it is now time for this performance to end. As the lead actress, I shall be the first to take my leave. Toodaloo! So she chose to make her escape after all, did she? So you're saying we shouldn't put much stock into what she just said? She probably just put on that performance to save face. As for the truth, it's unlikely that she actually has any idea. However, please be assured that I will continue to investigate this case in a personal capacity. Just as I promised, if the judgment has been incorrect, we will do our utmost to clear his name. All right. Even though we feel pretty badly for him, we'll take your word for it for now. After all, he's done plenty of bad stuff. So he should have known he'd go to prison someday, right?
What are you doing? Quick, stop him! Traveler! Hey! Traveler! Marcel! What are you doing over here? Stop resisting arrest! Cease, or we'll add another charge to the list. No, wait! I just want to ask the Traveler something. I'm not looking to run away. Please, just let me ask this नहीं one सुमेरु में small शायद नहीं thing. आया था चल Go on. Thank you. Thank you. I was being led away when I finally realized something. Where did you first hear the name Vache? I erased all records of that name. So, unless... Are you still trying to prove your innocence? Give it up. You've already been convicted. Really? You did? You're sure? You met her? But how could that be? How did you manage to do it? The Fountain of Lucine? Then she's been so close to me all along. And I just never... Please give me a chance to talk to her again. Just let the Traveler take me to the fountain to see her one last time. This is the last request I'll ever make in my life. You can do whatever you want to me afterwards. I don't care. What? Give an inch and you want to take a mile? Do you think serial killers get to make requests like that? Paimon agrees. Why should we give him what he wants when he's only done a ton of super terrible things? This request, is it worth as much to you as your life? Of course! Wait, no. It's worth even more than my life. Humans. Will they betray the instinct to live just to satisfy spiritual needs? Very well. I will grant your request. Your Honor, I fear that... I will go with him. You do not need to worry about any escape. In that case, I shall leave him in your most capable hands, Chief Justice. Thank you, Your Honor. Is this the place? You said she's here, but what do I need to do to see her? Yeah, and even Paimon could hear her after drinking that thing. Didn't you just drink a lot of it on the stage as well? Oh, in that case... Vache! Ah! Yes, that's it! So you heard it too! Vinier, it's me! It's me, Vache! Vache? Vache! I'm here! Where are you, Vinier? I'm coming for you. I'm finally here for you. Hey, wait! Be careful! Hey, wait! Vinier, is that you? It's me, Vache! Vinier! Vache? Why did you come? Didn't I say? You don't need to look for me. You look a lot older than I remember. How long has it been? It's been more than 20 years. I've suffered for over 20 years since the day you left. All this time, only the thought of bringing you back has kept me alive. Nothing else mattered to me. I must be dreaming. Who would have thought I'd get the chance to tell you all of my feelings like this? Vinier, you are my everything. I really don't know how I could live without you. But Vache, if you ask me, this world would be better off without Bye. What are you saying? If not for you, I would have finished my law degree and probably become a top-tier attorney one day. If not for you, I would have continued to pursue my love of the arts, and my works would have been displayed in the Palais Mermonia itself. If not for you, I would at least have been able to take care of my mother. And she would not have grown old and died alone, with nothing but the tears on her cheeks. It's all because of your selfishness, Vache. It's all because of you. Wait, you are not Vinier.
Who are you? You're right. I am not Vinier. I am the sacrifices. Every woman who died by your hand. As our bodies dissolved, our consciousnesses flowed back to the primordial sea. Our thoughts circulated endlessly within the primordial sea. And we were no longer individuals. But we became one. Just as streams of water come together in the sea. I'm Cressy. I'm Lemony. I'm Azine. The only one I am not is Vinier. Why? But then, where is Vinier? She doesn't want to see you anymore. Every tendril of her consciousness is avoiding you. This is what you get for your selfishness. Your selfishness robbed us of our lives and our futures. You said time and time again that you'd do any and everything for her. But did you ever consider whether she'd want to see you do the things that you did? If she would despise you for what you became? You are a liar, a heartless murderer, and a cowardly narcissist. The only thing you are not is Vinier's beloved. From the moment your first victim died and her consciousness merged with Vinier's, she has had nothing but pure hatred for you. No! Yeah! She can't hate me. Let me see her. Please! Have mercy! You still don't understand. When I said don't look for me, that came from the real Vinier. She really doesn't want to see you anymore. But on top of that, she also said that because it's her final drop of pity for you. She said that because she knew that if you did come here, we will show no mercy to you. Vache. Vache? Vache. 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 Drown. Finally, we have some time to do shopping. Gosh, it's really been a long time since we've been able to relax. Ah, well met, partner. I knew something great was going to happen when I woke up in such a good mood today. Even this weather can't put a damper on the demoiselle's mood. It's a pleasure to see you both again. Hello, bhai. हाँ चन पाई It's been a few क्या हो रहा है? Paimon's already started to miss you. Oh, now चोरी कर that लिया I क्या तुम believe. लोग? वही एक्ट I'm कर रहा easy to हूँ work with and always यार bring अब home तो the bacon. चालू किए Who भी wouldn't छोड़ treasure दिए, हम having a करेंगे अभी partner थोड़ी like बार me? में। क्या एक्ट 2 या एक्ट 1 एक्ट 1 भाई एक्ट 1 में देखना भी तुम्हारे साथ क्या होगा अबे एक्ट 1 जाए बार में मेरे को मैप नहीं खोले कल बैठ के मैप खोल रहे थे We're पूरा making non-stop trips between सही से Passant and the courts in Sen. बहुत सारा टीपी छूटा हुआ है तब भी मेरा टीपी जाके Spinity वो खोलना Rasul पड़ेगा नहीं एक्ट 1 में देखना memorial तुम for my भाई father. क्या होगा We never held a memorial when he first died. वही तो Since फाइल everyone knew that वापस even कुछ if we छोटा held अपडेट one आया था ये back फाइल then, इंटीग्रिटी no one वापस was ले going रहा to है come. This time, though, कल भी लिया आज भी everyone ले in रहा है Passant, वापस and even many people from the court all attended. So his name's definitely been cleared now. That's what we हार्ड like ड्राइव to में हम hear. सोचते थे कैसा It's होगा been भाई the अगर हार्ड dearest ड्राइव वाला wish of लैपटॉप ले लेता Demoiselle हम all तो along. खत्म हो जाता अभी तो That blasted stubborn fool. I was right to put my faith in him. I'm so glad I didn't give up on the case all those years अबे ago. कौन अपना माता बेची गई Oh, एक तो by एसएसडी the खरीद way, के रहो अच्छा I ran स्पीड into वाला Charlotte तो just पता after I left वो the अलग memorial महंगा है service. Well, maybe it'd be more accurate to say I knew she would be there, and there was no way she'd just let me go. So you know Charlotte too?
महंगा भाई? कहाँ महंगा? Way back when I 4000 की first became SSD the कितने president स्टोरेज of की the बता Spina रहे di हो? Rosula, she was all 4000 over की me. SSD Wouldn't take no for an answer. I believe the story was called The True Heart of Darkness. हमको Secret लेना है, हम लेंगे Tales of the SSD तो Yellow 1 TB Rose. का लेंगे To be डायरेक्ट। fair though, it was a ले लो, really 1 TB flattering feature. पड़ेगी 7.5-8 के। So चाइल्ड का क्या हुआ? we've been कुछ on नहीं, pretty good चाइल्ड terms को ever since. सेल पे कम बेहोश कर दिया, उसको जेल में डाल दिया। She was trying to lean चलो on भाई our हम आते friendship to हैं get me to फिर do जब an तक वही सब exclusive piece on the serial इंटीग्रिटी disappearances case. Oh yeah, she told us about that. She's always been super interested in that case, so now her wishes finally उसका come फाउल true लेगेसी का too. ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट ही नहीं हो पाया। Anyway, I told her to make sure that when she writes about you guys entering the opera house with the critical evidence, that you both sound really cool. देखते हैं। Now that's another thing to look forward to. We trust Charlotte's skills with a pen for sure. Oh, and in other सोमा को news, सोमा। I also took Clarand out for a मुंबई meal. से बोलना वीसी नहीं आया तो वहाँ तो बतौले मत ही मारे। फोकट में मेरे को स्पॉइलर मिल रहे हैं यहाँ पे बैठे बैठे। वीसी आया सवा। Oh, are you two on better terms now? While you were investigating Vache's अरे आज मैच है headquarters, चोमा Clarand खेलेगा। gave testimony on my father's behalf. खेलेगा तो It was देख thanks to लेना। her that we were able to turn the tide. I wanted to thank her. टीम को तो I mean, पता ही नहीं there's है also क्या no स्कोर point in being awkward all the time. So we took the chance to reconcile with each other. Oh, that's great. Paimon also thought Clarend wasn't actually a bad person. It's always good to have more friends. Anyway, now that the case has Abhishek? finally been solved, perhaps it will slowly अभी begin to वो fade कौन from है the वो public कॉपी वाला consciousness. हार्ले उसका तो चालू है उसके बाद कितना देर है क्या कितना देर है? शो चालू है। अबे तो अभी तो शुरुआत है भाई, अभी तेरी है शुरुआत ये एकदम। क्या बात है भाई कम से कम 45 मिनट हैं कम से कम। नहीं नहीं ज्यादा लगेंगे, 1.5 से 2 घंटे अभी और लगेंगे। वो तो डिपेंड करेगा ना कितने अबे जल्दी चालू होके investigation- कितना टाइम हो गया अभी क्या है नहीं नहीं, कोर्ट में चालू होने के बाद तेरे को 1.5 से 2 घंटे लगेंगे, ये बता रहा हूँ। ये अभी अंदर गया वो हाँ भाई अंदर गया, अब तुमको बैठना है 2 घंटे कम से कम। ये क्या है यार तू यड़ा बना है मेरे को मतलब अरे भाई मैंने बोला था कि तेरे को बिल्डिंग के अंदर जाने से बोलेगा तो वहां से तेरा शुरू हो जाएगा। मुझे लगा फाउंटेन बिल्डिंग तो फाउंटेन की तो बिल्डिंग में है, और किसकी बिल्डिंग में है? तो वो तो स्टार्ट में ही चला गया कहाँ स्टार्ट में चला गया भाई? वो सब बात होती है, लिनेट से कितनी बात होती है, फिर वो बुलाते हैं कोर्ट के अंदर, फिर तुम्हें अंदर जाना होता है। यार शो चालू हुआ यार अभी हाँ। समझ ले इधर से मैं एग्जिट किया हाँ? हम्म। तो ये शो से स्टार्ट होगा हाँ शो से स्टार्ट होगा। शो पूरा खत्म होने देना। ये पानी में क्यों गई वो कौन पानी में? अरे वो तो अभी तू बीच में ही है अभी। अरे वो मर जाती अभी है। एक ट्रेजेडी होगा, वो नहीं मरती है, वो लिनेट नहीं पोस्टर मरती है, लिनेट नहीं मरती है, हाँ, वो दूसरी मर बंदी जाती है। मरती अरे है। तू चुप रहे यार अभिषेक यार। नूब है यार ये लड़का एकदम। स्पॉइलर दे रहा है। I should pay a visit to my father's grave and tell ओके him the truth of ये what happened, रिपर ने as well किया as नहीं how it all लगता ended. सॉरी And on top of that, हाँ मैंने नहीं किया भाई। just मर how much जाएगी people लिनेट still look up to him to this शुरू में day. वो आर्कॉन जोकर वाले परफॉर्मेंस देते मेरे हैं। को हाँ फर्क ही नहीं पड़ता मैं अभी देख रहा हूँ कल भूल जाऊंगा Includes me, too. Miss Navia. Indeed. We want to go too. We also think Callus is a really admirable person. Sure thing. I'd like you two to share the moment with me. After all, without you, there might not have been such a positive ending. दोनों In that एक के case, गाल में everyone, बूंद है let's be off. दूसरे के गाल Considering the में recent weather, स्टार we'll be है lucky if we can हाँ। reach Poisson before dark. क्या सीन है ट्विंस है ना हाँ। डिफरेंशिएट करने के लिए। You're right. 5 स्टार 4 It's been स्टार क्यों raining किया दोनों non-stop को for a few days now. बट वो पता अच्छा है भाई? रे Access वो है ना? पायरो एक्सेस है भाई गेंशिन वाली, इसलिए लड़के को 5 स्टार होना है। ये फाउंटेन में कितने कैरेक्टर्स हमारे जिनकी एचपी जाती है अटैक करने नहीं में? बट वो अच्छा है This is where my father's Character. grave is.
क्या To be पता, perfectly हमने डैमेज honest, नंबर कभी देखे नहीं उसके। even I haven't been नहीं back here मतलब for स्किल के a हिसाब long से time. वो गान्यू जैसा वो छोड़ता है ना बेस चार्ज अटैक पे। हाँ लेकिन उसकी एचपी वो जाती है। उसकी एचपी जाती है क्या? हाँ जब भी तुम वो वाला 4 शॉट करोगे ना तो तुम्हारी एचपी जाएगी। ठीक है ना, जाने दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है। बट वही है ना, एनिमी आते नहीं उसके पास। हाँ वो उसको सांगोनो मारने में लग जाते कोको में हैं। है, सांगोनो में कोको में है, तुम्हारे पास एचपी की चिंता किससे भाई? नहीं बट वही है ना, वो गान्यू जैसा वो छोड़ता है, गान्यू का जो ये नहीं है वैसा उसका चार्ज अटैक छोड़ता है, तो एनिमी उधर ही उसको देखने में लग जाते हैं मारने लेकिन में। अब तो शायद कोकोमी सब पे आ गई ना विषय। पता नहीं। कोकोमी है मोस्ट ऑफ सबके पास My ही। apologies. सोमा के पास I नहीं should have थी तो asked उस पे भी before आई coming है, to ये pay बीटी my के पास नहीं थी, respects. बीटी के पास भी आ Say गई। that. कोकोमी मस्त है भाई, चाहिए। I was trying to say there's no need for you to apologize. I wanted to show my father how much I've grown. But still, I doubt I've grown to the point that even the Chief Justice would feel compelled to apologize to me over and over. In that case, I will stop apologizing for now. You really could use some pointers on understanding human emotions, Monsieur Neuvillette. In any case, why did you come to Poisson? Well, ever since that day, I've been turning a question over and over in my head. Just what is justice anyway? There was once a time when I didn't want to believe that there could be anything more important to humans than life itself. Oh, rather than that, it's probably more truthful to say I didn't believe humans were capable of resisting the most basic instinct of living things. That they could rebel against their own nature, or consider certain things to be more important than their own lives. Which is also why I didn't stop your father from beginning that fateful duel. I believed that a truly innocent man would never throw away his life like that. That there was nothing, should have been nothing more important than one's own continued survival. But Mr. Callis proved me utterly and decisively wrong. If not for his sacrifice, the serial disappearances case would have remained unsolved to this day. Mr. Callis made the choice he did for his daughter, for his associates, and for many people completely unrelated to him. And in the end, from a certain perspective, one could say that he did it all for the sake of justice, a justice that's higher than life itself. So, you asked me why I came here. I just wanted to say my apologies to Mr. Callis in person. I should have noticed all of this much sooner. This regret has filled me with a sadness that has haunted me for days. That high and mighty chair in the opera Epiclese indeed insulates one from many important things. Spina di Rosula, thank you so much for your hard work and perseverance. I'm sorry for being mad at you before. So, you're actually one of those types that's cold on the outside, but pretty thoughtful on the inside, huh? That reminds me of Silver, one of my guys. Sorry about that. Self-expression is not one of my strong suits. Didn't I just say you don't need to apologize? खत्म ही होने वाला है बस यार। So Navia and Neuvillette शाम को made खेलेंगे their वो peace कर as रहा है स्विमिंग के well. बाद। Let's not disturb them for now. We can wait till after they're done. Discord. Paimon's never paid respects at someone's grave before. Did Paimon do anything rude there? Huh? Oh, Paimon didn't know that was a thing. But Paimon doesn't know what she would do if she can't fly. Oh no. Paimon hopes Miss Navia won't be too mad. Anyway, Neuvillette is still standing around there. It's not often that we can catch him alone like this, so why don't we go talk to him for a bit? If we can't talk to Lady Farina, we can at least talk to him, right? Oh, it's you two. Did Miss Navia invite you to come pay your respects to her father? Mm-hmm. We ran into Navia on the streets today, so we just followed her here. I see, I see. Then is there something that I can help you with? Well, it's pretty hard to run into you. I
usually super busy, so we figured we could try to ask you a few questions, if that's okay. Please feel free. Though outsiders, you helped us solve one of the greatest mysteries in Fontaine, and it would be my pleasure to return the favor. So, at court, the bad guys referred to that special water as water from the primordial sea, but what is it really? Truthfully, that name is already quite accurate. I can only surmise that Vache and his ilk only learned of its nature and existence after extensive research. There used to be a special sea on the surface of this planet. The nature of its seawater was rather different from that of the sea we know today. Most of Tevat's life forms were first born in that special sea. You could say it nurtured much of the life on this planet. Huh. So it really was where everything began. It makes sense to call it primordial then. But today, the primordial sea no longer exists on the planet's surface. What Vache discovered must have been some kind of special case, or a remnant from a truly ancient age. Huh. So that's how it is. Oh, you really know everything, Monsieur Neuvillette. But if that's the case, then why would people, at least people from Fontaine, dissolve in that kind of water? Indeed. Why would the primordial sea, which was known to engender and nurture life, suddenly reverse itself and devour life instead? To be frank, that also doesn't match my understanding of this world and its laws. There must still be some unknown secrets around the people of this land. Is there anything else you'd like to ask me about? That the sea levels will rise and everyone will be dissolved in water, leaving Farina crying alone on her throne, but the sins of the people will be finally washed away for good. Does that appropriately summarize the version you've heard? That's right! It was Lenny that told us back then. And that about covers all the main points. Yes, up to the present, I think we reached a point where we have no choice but to confront this prophecy directly. कपड़े वपड़े चेंज कर दो और बाल का कलर चेंज कर दो, ये रंगली बन जाएगा. Rumors have it that this prophecy is rooted in the last words the former Hydro Archon left to the world before she passed away. Hello, किसकी बातें हो रही हैं? Prophecy? ये Neuvillette की. Former Hydro Archon? वही तो judge ना? This is the first time that we've ever heard Judge, of it. judge. Two parts of the prophecy have already proven correct. जो उसकी आवाज The वही है, rising जो sea होंगी levels and the ability of the people of पता Fontaine नहीं to लाख be होगा कितने dissolved. लगता थोड़ा वही रहे. We should be more vigilant and stay on the watch for further signs. Speaking of the prophecy, Farina has also always taken it quite seriously. Indeed, she has been collecting information and intelligence from across Tevat for this purpose. If the rumors were true, then perhaps this prophecy is the conundrum left to Farina by her predecessor. But with Farina being the way she is, can we really trust her to solve it? Is there anything else you'd like to ask me about? My apologies. My investigation has still not reached its conclusion. However, I still believe the judgment of the Oratrice was not rendered arbitrarily. But you also said you thought he was innocent. For many years, I have been quite aware that the Oratrice does not simply mechanically repeat the verdict that I give on each case. As a divinely created mechanism, the people's unified faith in the concept of justice is integrated into it. Not only can it produce the incredible power of indemnitium, but it likely also possesses other traits, such as self-awareness. Which is all to say, I have been prepared for a situation like this for a long time. So when Lenny told us that he heard a human voice from the room where the Oratrice's core is stored... I was not aware such a thing had occurred. Perhaps that could serve to prove my conjecture. I will add that to the list of items to investigate. In any case, I am inclined to believe that the Oratrice does have a methodology all its own. We just do not have enough information. Based on Farina's reaction, I doubt even she had any idea what was going on. She managed to bluff her way through it, though. The time-tested twin tricks of bravado and drama. While we do intend to get to the bottom of this,
For now, we regret to say that the Fatui Harbinger will just have to bide his time in the fortress of Meripede. If we did incorrectly convict him of crimes he did not commit, we will most certainly compensate him to the fullest extent allowed by the law. If you ask Paimon, the only compensation he'll want is a no-holds-barred fight with you. Is there anything else you'd like to ask me about? Your sibling? Another blonde-haired traveler? I'm sorry, but I've never seen anyone who matches that description. If he ever stepped foot in Fontaine, I'm sure he followed our laws to the letter and had no reason to appear on the stage of the opera Epicles. Is there anything else you'd like to ask me about? Very well. It was my honor to provide you with what answers I could. I very much enjoyed conversing with you. It will soon be time for me to leave this blissful tranquility behind and return to Palais Memornia. You really are super busy, Monsieur Neuvillette. Paimon thought you only came here to pay your respects today because you had the day off. Crime and villainy do not have the day off, and so justice must work around the clock as well. This is merely the nature of a justice's work. All right. You've got a point, huh? Paimon just noticed that the rain has stopped. ये क्या लिखा है? नार्जिस एंड क्रूज। आगे 4.1 में आ रहा। हाँ 4.1 में आएगा, मतलब जैसा उसमें भी लिखा हुआ था। Shine down. I see everything. तो कोई है नहीं। Illusion shattered. Take them. I have no need. सही है। परमानेंट में आ रहा है कि किस में आ रहा है? उसमें तो लिखा था परमानेंट में आ रहा है, लेकिन देखो किस में आ रहा है। एक विश मिल गई। जल्दी से 9 विशेष और चाहिए, और क्या। Another mission, another fountain. स्टैंडर्ड ऑफ मेंशन नहीं किया। ओ चलो जब मेंशन करेंगे, अभी वो जब आएगा लाइव स्ट्रीम 30 दिन के बाद, तो पता चल जाएगा। चलो भाई वो अनलॉक हो गया। मिशंस यहाँ पे कल करेंगे इसके कमीशंस।
shall perish. Illusion shattered. Throw. There is no escape. I see everything. The Temple of Wisdom. Rest and rebuild. Spring forth. This may turn a little. Yeah. Ha! Hey. Torn to oblivion. Shine down. Allow me. Committed to memory. दूसरा वाला इतने सारे वे पॉइंट हैं वही अनलॉक करने के लिए। ये सोमा है। हेलो सोमा। हेलो सोमा सोमा। सोमा नहीं है यार। अच्छा ये देखो ये वाली जगह है जहाँ से तुम अंडरग्राउंड विलेज में वो जा सकते हो। अंडर वाटर जो विलेज है यहाँ से नीचे जाने का। खोल ले तो बढ़िया है फिर। यहाँ से किधर जाना था? वही अच्छा इधर से।
अच्छा यहाँ से ऊपर जा सकते हैं और जरा अच्छा वो सही कैसा उसके 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 जो पास में वो चीजें लगी हैं उसी से वो सही हुआ है ना। मैंने देखा था कि मैंने किया नहीं था। Delve into destiny. Swan Fury. रस्ते का फिसल जा रहा है भाई। ऐसा कोई रास्ता तो है नहीं बाहर जाने का, हो ही नहीं पाएगा। अभिषेक अभी एक ये मतलब वो जो शो वाला हो गया, वो जो 30 प्रीमो मिल गया, तो अभी कुछ सर्च करना है। क्या अभी अभी वो ऊपर से गिरा है, जो गिर रहा था वो पानी वाला बक्सा? नहीं, क्लू सर्च करने हैं 3। हाँ तो तुम्हारा भी शुरुआत हुई है, समझ लो और क्या। ओके, तो अभी ये जो है बाद में स्टार्ट करना पड़ेगा ऐसा? नहीं नहीं, बाद में क्या, तुम अभी 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 स्टार्ट कर सकते हो, इसमें क्या है? नहीं नहीं नहीं, मतलब अभी अगर मैं बाहर गया तो ये करने से मतलब उसके बाद आ सकता हूँ ना अंदर ऐसा? कहाँ गया था तुम बाहर? वहाँ मतलब क्या हो रही है? चेंज करके जा रहा हूँ। क्या करूँ? वेस्ट करना है। Not that living and interrupt your story experience. क्या तो मैंने कमीशन और नहीं किया ना, कमीशन कर लेता। The wind rises. ये कौन से मोनास्टर हैं? Gather. Let me scribe. Go. Unsolicited, and all the more valuable for it. The wind rises. Too slow. Behold. Quick, the wind rises. ऐसे क्वेस्ट क्यों लाते हैं भाई? मतलब क्या काम धंधा? अरे भैंस ने क्यों शुरू हो गया भाई खुद ही से क्वेस्ट? 3 घंटा मैं सोच रहा था स्ट्रीम के बीच में थोड़ा थोड़ा करूंगा। लंबा जाएगा स्ट्रीम के बीच में अगर मैं करने की कोशिश करोगे ना। वाह वाह, गालियां पड़ेंगी कि भाई ये कैमरा कौन है, मूव नहीं कर रहा भाई ये। मतलब कैसा होता है बैन के टाइम
टाइम मिलता है तो उस टाइम करना थोड़ा थोड़ा, तो ऐसा सोचा था। बट ये ऐसे 2 घंटे मतलब मैंने अभी समझ ले थोड़ा सा किया मैंने वो, तो फिर कल चालू किया देख अब वही फिर से वही कर रहा हूँ। किधर है भाई मजाक? ये इस जगह पे दिखा रहा है, ऊपर तो कहीं है नहीं, नीचे ही हो सकता है, लेकिन नीचे कहीं कुछ जाने का तरीका नहीं है। Too slow. क्या हो गया? ओके फिक्स। इसको तो किधर चाहिए? चेस्ट के पास भेजना है। नहीं ऐसा तो मारना था, हो सकता है अलग अलग का हर अलग अलग हो ना।
ये कौन सी जगह है? A lonely place. सही है नाम? वो है क्या? हाँ वही। Quit following me. ये जगह है यहाँ पे काफी सारे हैं वो। Swollen Fury. ओह मैं म्यूट कर रहा हूँ। क्या हो गया? मैंने म्यूट करा, मेरे को भी याद आया। सैड लाइफ। सैड नहीं, नहीं तो हो गया। सैड लाइफ। हाँ वो कह सकते हो। ये टट्टी वाली लाइफ एक्चुअली भगने बैठा हुआ था। ऐसे बाहर नहीं जा पा रहा भाई कैरेक्टर, ये क्या फुद्दू गिरी है? बीटा ये ई रूपी का बीटा टेस्ट चल रहा है, इसमें पार्टिसिपेट करूं? इसमें ई रूपी का बीटा टेस्ट। वाह टेस्ट पूरा ले रही है। तो नहीं ये इससे किधर से करना है पार्टिसिपेट? मेरे को तो मेल आया आईसीआईसीआई क्लोज्ड यूजर ग्रुप है, बीटा टेस्टिंग के लिए आपको चूज किया है। तो ठीक है देखते हैं। किसके बेटे को टेस्ट करने जा रहे हो तुम? आरबीआई का बेटा है डिजिटल रूपी, उसको टेस्ट करने जा रहा हूँ। डिजिटल आया ना, अच्छे से टेस्ट करो 4 सालों के। यार ई रूपी डाउनलोड करने के लिए मेरे को रीजन चेंज करना पड़ेगा। बाप रे कितने क्या क्या खाया मैंने यहाँ पे। 1 2 3 4 5 लोग पूरे मिल। अरे यार क्या किया गया? ले लो नमस्ते यार। स्टार्टिंग में बस भेजना है। मेरा जूता भी कंप्लीट नहीं है। कौन इनाजुमा में गया? मैं ही गया वो साला म्यूजिक सुनने में। इनाजुमा खुद ही बोल रहा कौन गया? अच्छा मैं ही गया म्यूजिक सुनते हुए कि इनाजुमा कहाँ चले पे गए रे? अरे वो एम्बलम सेट के लिए गया, अभी ओपन अरे किया एम्बलम गेम उसमें एम्बलम चेस्ट में आ गया ना, उसमें से निकाल ले। नहीं रेजिन वैसे भी खत्म करने। तो वो नया डोमेन फार्म करना, एम्बलम क्यों कर रहा है? और खुला नहीं ना अभी कुछ। नहीं तो नया डोमेन तो बस जहाँ से फाउंटेन एंटर होता है उसी के राइट में देखिए एक डोमेन है, जाकर किसी से ओपन हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं अनलॉक करना। अरे ओह कितना सारा डैमेज दे रहा है। डेजर्ट एंड होता है, फाउंटेन स्टार्ट होता है, वहीं देख एक डोमेन है। ओके वो जो नए मैप में ही है। हाँ बस पहला ही अनलॉक में। तो नए मैप में ही होगा ना भाई, जो आने वाले मैप में वाले डोमेन कैसे फार्म करेंगे? पागल बता रहा नया मैप, ऐसा लग रहा है कोई आने वाला मैप है उसमें पहला आएगा। वाला जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, वो जो बड़ा टावर होता है वही अनलॉक है मेरा। वो मेरे सेनपाई वो बोल रहा था वो टेलीपोर्ट विलीपोर्ट अनलॉक कर रहा है भाई कॉल करता है ये मतलब
क्वेस्ट करते करते हो जाते अनलॉक ना। नहीं नहीं, मैं सबसे पहले टेलीपोर्ट ही अनलॉक करता हूँ भाई। नहीं मैं तो अभी क्वेस्ट करते करते जिधर जाऊंगा उधर आसपास में जो रहेंगे वो अनलॉक करता। मैं टेलीपोर्ट सबसे पहले अनलॉक करता हूँ और रास्ते में जितने चेस्ट मिलते हैं और ये मिलते हैं हाइड्रोक्लिस, सब उठाते हुए जाता हूँ। सेम है। चलो बाद में फार्म नहीं होता पर यार कहाँ कहाँ का मिसिंग था, एक एक करके दोबारा करना पड़ता। नहीं, मैं मैप पे मार्क कर देता हूँ। अरे मैं भूल जाता था। नहीं मैंने ये सीख शुरुआत लिया ना में भाई। शुरुआत में इतने समझदार थोड़ी थे। शुरुआत में तो अरे ये भी देख रहा है, ये भी देख रहा है, ये क्या है, ये भी उठाता है, अरे ये बढ़िया लग रहा है, ये भी उठा लेते हैं। मैंने शुरुआत तीसरे में तो ऐसे होता था। मतलब मैंने लिहुए तक कुछ नहीं किया था, इनाजुमा आते ही मैंने ये वाला काम स्टार्ट कर दिया था। नहीं मेरे तो फिर को तो हो आदत है रास्ते में जो भी आता है वो उठा कर लेने दूं। का। हाँ। नहीं तो होप को ज्यादा पैसे कभी देने ना पड़ते कभी हैं भाई बाद में। कभी कभी काम पे आता है वो चीज। वो उठाया हुआ सामान अभी काम पे आ रहा। बट वही है टेलीपोर्ट के लिए ऐसा मतलब क्वेस्ट जब चालू होती है आर्कॉन तो मैं आर्कॉन पे करता हूँ। फिर जो टेलीपोर्ट अनलॉक होते हैं वो हो जाते हैं उसी के बीच में, जो नहीं होते फिर वो बैठ हेलो के करो फिशी, फिर। क्या हाल है? कौन किसके क्या? फिशी ज़ीउस स्ट्राइकर, इसके साथ तुम रैंक क्या खेलते हो। क्या है? खुशी क्या बोला तो? फिशी फिशी। शील अबे फिशल नहीं बे, फिशी। FISHI मछली के आगे आई। फिशी क्यों बोल रहा है उसको? अरे क्योंकि उसने अपना उसका यूट्यूब पे नाम है नाम ना रखा है यूट्यूब ना पे। फिशी। ओके यूट्यूब पे आया है, बोला डीसी पे आया है। क्या कौन है? रीपर है, क्लाउन है, मैं हूँ, बेटी है, बस इतने ही लोग हैं। भाई ये बहुत स्लो है ये जो जहाज चल रहा है। कौन सा जहाज? वो इधर उधर जाने के लिए जहाज है ना। हम बेटी की तरह है भाई वो जहाज। टेलीपोर्ट अनलॉक करते हैं भाई। वही अभी अनलॉक नहीं है ना उधर। बाय 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 वो बाय 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 पहुंच के मैं वो करूंगा। बाय 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 फाउंटेन आ बाय गया। बाय बाय हाँ बाय फाउंटेन आ बाय गया। बाय 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 भागो 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 भागो। भाई इसमें बताता भी नहीं कि हॉट वाटर है भाई, मैं तो ऐसे ही चला गया, एच पूरी खत्म हो गया। क्या एक और जगह गोटे हॉट गर्म वाटर हो की गए। आई है क्या? नहाने जा रहा था। हेलो रीपर, एक क्या और कह रहे हो जगह हॉट गर्म? वाटर की आई है क्या क्या? कह रहे हो गर्म पानी है, गोटे गर्म हो गए? ए भाई उबल गए, खा भी लिए किसी ने, ऐसा लग रहा है। बंद कर दो। अरे 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 क्या बोल रहा है अभिषेक? कह रहा हूँ एक और जगह मिली है क्या हॉट वाटर की? अरे क्या पता वो उसमें वो था, बहुत सारी जगह भाई हॉट वाटर तो। उसमें हाइड्रोक्लिस मिल रहा था तो मैं गया, सिर्फ पानी का निशान आ रहा है, बना हुआ HP कम होती जा रही है। तो उधर कुछ है नहीं बचने के लिए? पता नहीं अभी तक तो देखा नहीं मैंने। भाई ये मस्त है बे पानी में ऐसा। अनलॉक हो गया। टन 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 टन। भाई क्लियर है, प्लेन लग गया।
नेशन रोल कुछ साउंड उर्दू बना रहा हूँ। क्या हो रहा है भाई फिशी तुम्हारे साथ? मछली पकड़ने की जगह है। अरे इसमें कैसे मार देंगे इसको? ब्लेड आर्मर है रामपुर पे। ये है भाई तो टावर को बाहर रख, टावर को बाहर, अबे लॉर्ड को बाहर रख नल्ले। एक एक चालू कर टावर। Swan Fury. तो यही है। स्टेबल हमारा फ्लैंक है। जॉनसन क्वालिटी मार्केट पे किधर है? को लॉक करो। नए एम्ब्लेम किसके लिए वैसे? अभी नहीं पता। लाइनी के लिए एक तो है और वो नुबड़े के लिए 5 स्टार के लिए कौन सा 5 स्टार? लाइनी की तो बात कर रहा हूँ मैं। वही लाइन है क्या? और क्या? ओके वो लेनेट है दूसरी। एक क्लाउन क्लाउन क्या खेल रहा है? देखा ही नहीं मैंने, सेट किया है। मोबाइल लेजेंड्स एमएल खेल रहा है वो। तुमको नहीं बुलाया उसने फिशी? भाई क्या नूब मॉन्स्टर है भाई। पेप मार रहा है पिचकारी। किधर है भाई? यार इन्होंने तो रेजिन फार्म करना किधर वो है करना भाई? चाहिए यार, इजी करना चाहिए। स्टार रेल में बेटी कैपेसिटी उसकी बढ़ रही है डजन की, पता है? कितने? 240 हो रही है। भाई ये एलिमेंटल वाला वो ये उसके लिए है क्या सेट? किसके लिए? नहीं नहीं, नॉर्मल चार्ज वाला उसके लिए। नॉर्मल एंड चार्ज अटैक डैमेज 15%। मैं सोच रहा था ये चार्ज वाला उस पर डाल सकते हैं क्या गानियों पे? क्यों अभिषेक? मजे से। क्या पता। इंक्रीज एलिमेंटल्स गानियों पे एचपी का वो। लेकिन एचपी उसकी एचपी कम नहीं होती इंक्रीज ना, और बात वो है। डिक्रीज क्रिट रेट विल बी इंक्रीज। 12% क्रिट रेट का ज्यादा यूज भी नहीं है ना गानियों के लिए, अगर वो रहेगा प्रॉपर बिल्ड रहेगी। प्रॉपर बिल्ड तो नहीं है बेटे। नहीं, और वो अगर एक क्रायो रख ही देते हैं साथ में। क्लाउन भैया को बोलो गेम एंड हो तो बता। दूसरा सेट क्या है? इंक्रीज क्लाउन वो फिशी बता रहा है कि गेम एंड हो तो बताना उसको। इंक्रीज डिक्रीज एचपी है। एचपी इंक्रीज डिक्रीज तो होती रहेगी। फिशी कौन हुआ बे? वो तो भाई ज़्यूस। अबे सालों अपना नाम नहीं रख सकते क्या तुम लोग? अलग ही नशे लोगों के एक नाम होता था ना, एक अलग। दूसरा सेट ईएम दे रहा है। ईएम स्किल डैमेज 20 एलिमेंटल स्किल डैमेज वो 20% बढ़ा रहा है। और 4 पीस दे रहा है इंक्रीज एलिमेंटल स्किल डैमेज बाय 25% एडिशनली व्हेन नॉट ऑन द फील्ड। मतलब सपोर्ट के लिए एलिमेंटल स्किल डैमेज विल बी अच्छा तो फर्दर वो जो इंक्रीज बाय 25%। वो जो चार्ज अटैक वाला है वो सिर्फ एचपी ऊपर नीचे पे है क्या? हाँ हाँ, हाँ वो तो फिर वो उसका काम जो करना। स्कोर सेट का। फिर वो काम कर। अगर 2 सेट का डाल सकते हैं, वो 2 सेट क्या ही करेगा जब दूसरे डालने पड़े। Elemental 20 additionally when not in field.
Elemental scale will be further increased by 25%. If effect will be clear 2 seconds after taking. क्या समझ ही नहीं आ रहा है क्या है? ऐसा कौन सा कैरेक्टर है भाई ये एलिमेंटल स्किल फील्ड पे नहीं रहता तब डैमेज देता है? मतलब कोमी है, बहुत दोबारा सारे दोबारा बोल नायगा जरा। है, नीलो है, कई सारे कैरेक्टर हैं जिनकी तो स्किल एक्टिवेट करके एओई में चलती रहती है ना, जैसे बेनेट हो गया, शांगलिंग हो गई, इनका ई शिंक्यू हो गया। ई स्किल का डैमेज करना है ना, तो ई स्किल के लिए है ना। ई हाँ तो ये तुम्हारा नहीदा हाँ है और शोगन है। शोगन ई है नहीं, क्या? क्यू भी तो काम करेगा। नहीं उसमें उसमें नहीं लिखा है सिर्फ ई। एलिमेंटल स्किल है एलिमेंटल हाँ स्किल। तो ई है हाँ तो तुम्हारा। वही तो बोल रहा हूँ ना, शिंक्यू का क्यू जो है वो एलिमेंटल्स के लिए तो है। नहीं नहीं वो एलिमेंटल नहीं बर्स्ट नहीं, है। वो बस एलिमेंटल वो बर्स्ट है। बस्ट है। नहीं, एक मिनट देखने दो मेरे हाँ को। हाँ ई वाला एलिमेंटल जो बर्स्ट है वो छोटा देखो। स्किल है ना नहीं नहीं, वो सेट वाला। देखने दो, ये बोल रहा हूँ। तो उसमें तुम्हारा एलिमेंटल स्किल में देखो, तुम्हें नहीदा आती है, फिशल आती है और शोगन आती है, और जोंगली आता है। हाँ जोंगली आता है। आर्कॉन तो मुझे लगता है ये छोड़ के तीनों आते हैं, 20 छोड़ के। हम्म। दूसरे वाले सेट का नाम क्या है जो पढ़ रहा है तू बेटी? एक मिनट अभी एक सेट आया। कैसे देखना बे? गोल्डन ट्रोप एक मार्क का क्या है ये भाई? बहुत बेकार नाम है। मेर मेरे पास हंटर ऐसा कुछ तो है और गोल्डन ट्रोप है वो एईएम वाला। एलिमेंटल स्किल में उसकी भी है, क्या बोलते हैं, शांगलिंग। हाँ शांगलिंग भी होता है। शांगलिंग का गुड्डा है, फिर कोकोमी तो है ही है, कोको में भी है चीची है, बट काज वो उनका ई का जोंगली। इतना डैमेज नहीं है ना अपना डैमेज कोकोमी का है बढ़ाने। ना, कोकोमी का कोको में क्या है? एलिमेंटल रिएक्शन बढ़ जाएगी ना अगर एलिमेंटल उससे बढ़ रहा है। तो मैं आता हूँ। आज का डे हो गया थर्सडे ना, 17 राइट। ये हाइड्रो कौन से कंट्री से बिलोंग है? फॉन्टेन है फॉन्टेन फॉन्टेन। कंट्री वो फ्रेंच फ्रेंच है वो। यूरोप 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 से, पूरा यूरोप। लग तो रहा है, नाजी रेफरेंस है तो जर्मन भी लग रहा है। Take it and have करना fun. पड़ेगा नहीं तो बाकी भाई। नाम सबके ज्यादातर फ्रेंच में ही है भाई। ऐसे ऐसे नाम है, क्या ही बोला जाए। Quit following me. जियो डैमेज बोनस मिला है। ये एक अच्छा मिला है, बकोड़ा सेट।
क्या 1 घंटे के बाद चीजें गिर रही हैं भाई? देखा हो गए हैं इधर, ये वाला एक बाकी है। इधर तो पता नहीं कितने सारे टेलीपोर्ट के अकाउंट बाकी हैं भाई। आता हूँ मैं स्विमिंग से, फिर खेलते हैं ठीक है। विश्व कप अपन ओवर ड्राइव। हम्म। बीटी तो स्ट्रीम करेगा तो बेचारा कुछ नहीं खेल पाएगा। अरे बेटी तो खेलना ना हुआ, बोला कि मैं नहीं कर रहा आज स्ट्रीम बस। आज अपना मैच भी है, अभिषेक तेरे को खेलना पड़ेगा। मैं नहीं खेलूंगा भाई, मैं नहीं खेलने वाला। तेरे को देखना जबरदस्ती खिलवाई देंगे। मैं बोलूंगा भाई तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओ और क्या। मैं नहीं खेल रहा हूँ भाई आज। आज तो वैसे भी मुझे बाहर ही जाना है, शाम को थोड़ा काम है तो जाना ही पड़ेगा। तो वैसे भी मैं खेल नहीं सकता। कमीशन रिवॉर्ड नहीं लिए तुमने? हेलो, मैंने तुम्हारा अकाउंट ही लॉगिन नहीं किया। तो करो ना भाई। अरे यार उसे यार, ये क्या है भाई, गलत है। टीपॉट में भी जाना था यार। अच्छा मेरा भी टीपॉट में क्या होगा आया भाई। नया कुछ? टीपॉट में क्या आया नया कुछ? कुछ नहीं आया ना। तू टीपॉट से क्लेम नहीं करता है क्या चीजें? 2-3 दिन में एक बार करता। हाँ वही, मतलब वही है, फुल होने से पहले करने का। हाँ। कभी कभी फुल हो जाता है, क्या करें। मेरा फुल नहीं हो पाता वैसे। मैं तो कुछ बाई भी नहीं करता हूँ, बस वही जो चीज़ है ना वही बाई कर लेता हूँ बस। मैं वो लेता हूँ ना, वो रेजिन लेता और वो आर्टिफैक्ट के 2 आइटम बस। जब को बोलना ये एंड हो तो बता। बाकी मैंने कुछ लिया। और रेजिन लेना भी बंद करना चाहिए भाई, बहुत रेजिन पड़े मेरे पास। क्या रेजिन? वो फ्रेजाइल? हाँ वही फ्रेजाइल। 1200 मैंने भी 1200 फ्रेजाइल पड़े। दिमाग में खराब हो गया क्या तेरा बेटी? हेलो, अरे नहीं वो 1200 का है ना एक। अरे तो वो यूज भी तो हो जाता होगा ना, वो तो हफ्ते में एक्सपायर हो जाता है ना भाई मेरे। हाँ वो होता है यूज, कभी कभार हो जाता है एक्सपायर। मतलब 1-2 बार एक्सपायर हुआ है मेरा। भूल जाता हूँ मैं यूज करना। मेरा शायद एक बार एक्सपायर हुआ है, उसके बाद से एक्सपायर नहीं हुआ। तू लेता है वो हर वीक? और क्या, हर वीक लेता हूँ, हर वीक यूज करता हूँ। अभी इस वीक का यूज करना बाकी है। मतलब पिछले वीक जो मैंने लिया था वो यूज करना बाकी है। 14 दिन के लिए होता है ना, मतलब 14 दिन होता है ना, 2। हाँ वो मतलब अगले वीक का रहता है। मतलब वो ये मंडे वीक लेगा तो नेक्स्ट वीक अगले वाले मंडे को एक्सपायर हो जाता है, वो ये रहता है। ये कौन से नए वो आए हैं भाई, ये समझ नहीं आ रहा मुझे। मेरे पास वो फ्रेजाइल बहुत पड़े वैसे। कितने पड़े तेरे पास फ्रेजाइल? मेरे पास तो 102 ही हैं बीच में मैंने, लेकिन मैंने यूज भी कुछ किए हैं। तूने तो साले यूज ही नहीं किए भाई, तूने यूज ही नहीं किए हैं। मैंने यूज ही नहीं किए ज्यादा, कभी कभार ही यूज किए होंगे। बाद में यूज करूंगा बोला, अभी तो यूज करने का रीजन ही नहीं है। यार क्या ही करूं। एक तो आर्टिफैक्ट वो बैग फुल होता रहता है, तो वो खाली करने के लिए नहीं है। अगर वो खाली होता तो किधर मैं यूज करता। अभी नए आर्टिफैक्ट तो मैं नए आर्टिफैक्ट जो भी फार्म करता ना, मैं फटाक से वो कर देता उसके। क्या? अच्छा नहीं तो हटाओ। पुराने पड़े हैं मेरे, चेक करने हैं बहुत सारे। मेरे भी पड़े हैं, मेरे भी। टाइम निकालना पड़ता है वही तो भाई। कंटेंट तूने बेटी शुरू किया कि नहीं किया? किया तो अच्छा, अभी। हाँ शुरू किया तूने, एक्ट 1 शुरू किया है। हाँ वो तेरी एक्ट 1 जिंदगी अभी का पता आखिरी नहीं, एक्ट। मैंने तो एग्जिट किया, अब पता नहीं किधर से स्टार्ट होगा। फिर से स्टार्ट होगा तेरा वो।
घंटा भाई मैं नहीं कर रहा फिर। करना ही पड़ेगा ना, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तू फिर फाउंटेन के फिर क्या कहते हैं करूँ कमीशंस नहीं ले सकता है जब तू एक्ट 2 कंप्लीट नहीं करेगा। फालतू है यार, इनको क्या मतलब, क्या लगता है हम वेले पड़े हैं क्या? और मेरे ख्याल से शायद तू वो भी रेपुटेशन भी शायद नहीं कर सकता अगर तू एक्ट नहीं करेगा, मुझे पक्का नहीं नहीं, पता है। रेपुटेशन को तो आर्कॉन क्वेस्ट मस्ट होती है ना, कोई तो आर्कॉन क्वेस्ट करने के बाद वो अनलॉक होता है तेरा हाँ तो हर वही रीजन जो का। है। तो वो तो है ही, बट इनको क्या दिमाग नहीं है क्या थोड़ा? मतलब क्या पब्लिक ऐसी पड़ी रहती है क्या, वो 2-3 घंटा गेम में देगी? क्या पता ये कौन सी जगह है भैंस की आँख। वो स्ट्रीमर वीमर को ठीक है, बैठे रहते वो 3 घंटा एक सी जगह पे। कुछ खोला। नहीं, मेरा अगर वो नहीं रहता ना टूर्नामेंट, मेरा भी हो जाता है, ऐसा कुछ इशू नहीं, बट लॉजिक क्या है इस बात का भाई? पार्ट पार्ट में जैसे बाकी आर्कॉन क्वेस्ट थे, थोड़ा किया आज, बाकी चीजें भी करने के लिए होती है ना। ये है क्या उधर क्राफ्ट वाला कंटेंट में? क्या चीज? वो जो आप लोग कंडेंस बनाते हो, क्राफ्ट वाला मिला उधर किधर? हाँ हाँ है। इधर है। मुझे मैप पे देखना पड़ेगा। मेन सिटी में ही है वैसे। मेरा अभी तो Solidify. Written in the stars. Shadows of fate. Life goes on. Wretched vermin! Squall and fury! गर्लफ्रेंड ज्यादा स्ट्रांग है बे। क्या? वो डोमेन में मॉन्स्टर नहीं है, एक कपल आता है, उसकी गर्लफ्रेंड ज्यादा स्ट्रांग है। पता नहीं। उसमें दो टाइप के है ना, तुम उसमें से दो मतलब कि दोनों में से चूज कर सकते हो, तुम्हें कौन सा मटेरियल निकालना है। अरे वो आर्टिफैक्ट का एक बार अपडेट आने वाला था, 2 सेट में एक सेट करना हाँ है लेकिन चूज। पता नहीं, हो सकता है किसी ने ऐसे ही बोल दिया हो, आने वाला का पता कभी ना हो, ये भी हो सकता है ना। क्या नुगरा बना कर रहा है यार ये भाई, किधर है वो? इन्होंने करना चाहिए यार कुछ, वो स्टार रेल इतना इजी बना है और ये हगोड़े जैसा अभी भी वैसा ही है। स्टार रेल के मेरे रेजिन का भी फोन नहीं होते, बोले बहुत रेयरली होते हैं। क्या जाओ ऑटो पे लगाओ, खत्म। Delved into destiny. सिद्धू किधर है भाई? एक सेकंड, इतना ऊंचाई पर कहाँ से पहुंचेंगे भाई? अरे यार क्या भाई, को प्रॉब्लम है। Shadows of fate go. Behold! Search for it! इसको मारना जरूरी था। And wind rises.
बेटी तो विशेष अब सेव कर रहा है कि अभी भी कर रहा है विशेष? नहीं नहीं नहीं, अभी क्या करूँ अभी करके? लेने के लिए? नहीं बाबा, वो आई ना, वो फ्री में दे दिए उन्होंने। लिनेट सॉरी लिनेट वो लिनेट फ्री में दिया नहीं, लोगों ने, वो लेनी थोड़ी वो ना। क्यों चाहिए भाई? पायरो अपने पास है, अभी नीड नहीं उसकी, बाद में देखेंगे। मेरे पास भी होटाओ है पायरो में, योइमिया है और डीलुक है। नहीं, सपोर्ट हीरो इतना डैमेज देते हो, सपोर्ट भी करते हैं, ये डीपीएस लेके फायदा नहीं लगता है ना, दोनों काम हो जाता है भाई। अभी वो देखना, होता हो रेयरली एबिस 12 पे यूज हो रही है। और रेडन नेशनल टीम है जिसमें सब सपोर्ट है भाई, कोई है ही नहीं डीपीएस उसमें। वो तो है, क्या किया जा सकता है। सपोर्ट का गेम है पूरा। वो तो है। वैसे भी डीपीएस रखेंगे तो एक हाथ ही डीपीएस रख सकते हैं, एक या दो, दो सपोर्ट तो मस्ट है, नहीं तो भाई हक देगा उधर। मेन डीपीएस को एक ही चाहिए होता है एक टीम में, तो एक ज्यादा रखना हाँ तो भाई, मतलब उनके बिना भी काम हो जा रहा है। मशीन गन लेके घूम रहा होगा। Life goes on. The wind rises. Down. ये बाकी है, ये बाद में अनलॉक करते हैं भाई, इतना वो जा रहा है टाइम। अभी लेने की स्टोरी कस्ट भी करना है। हाइड्रो सिजिल कितने कलेक्ट हो गए बेटी तेरा? घंटा पहला मिला मेरे को। सही है। पहले 6। भाई ये क्या है? क्या हुआ? बस 33 हैं। This realm. ओशिया ब्लॉक क्या है? क्या पता, रेड करते रहो जो भी तुमको नई नई चीजें मिलती हैं। अरे ये कुछ तो तेरे आजू बाजू में घूम रहा।
क्या उसको उसको कोई मार्क बन के आ रहा है? घूम रहा आजू बाजू में कुछ। तेरे उधर कोई चला जा। मार्क बन के आ रहा है? पता नहीं, रुक देखना पड़ेगा। भाई ये क्या हाइड्रो वाला? भाई ये ओशनेड है तो क्या? कौन है ये? ओशनेड है क्या बेटे? नहीं, वो स्लाइम का वो बन गया, वो हाथ भी निकल गया उसके। हेलो हेलो अभिषेक, हाँ रोशन। गेंशिन में है क्या? हाँ ये जरा कोड डाल, मेरे को तो क्या? तेरे में कोड डाल। 1 मिनट लोडिंग पर हो जाए। कोई गिफ्ट मिला देख क्या तुम्हें। डिस्कॉर्ड में मिला है? हाँ हाँ, ओह, सबका अलग रहेगा ना, तेरा अलग रहेगा, मेरा अलग रहेगा। स्ट्रीम कर रहा क्या अभी? बताओ कोड। भेज रहा हूँ, स्ट्रीम तो करने का। भेज रहा है, ठीक है डिस्कॉर्ड पे तो सेंड कर दो। काय का कोड है? एमडी आ गया। डिस्कॉर्ड पे तेरे कोड आया होगा बेटी, तू अपने आईडी में रिडीम कर लेना दोस्ता फिर। मैं खेलता ही नहीं हूँ गेंशिन इम्पैक्ट। अरे पर डिस्कॉर्ड में किधर कोड आया? पता नहीं, मेरे में भी वैसे अभी आया नहीं, लेकिन रीपर के में आया था। रीपर ने सुबह बताया मुझे। इसके बाद नाइट्रो था शायद, उनको मिल रहा है। गिफ्ट इन्वेंटरी करके एक ऑप्शन होता है पीसी में डिस्कॉर्ड के। वो मेरे में भी है लेकिन वो नहीं दिख रहा। गेंशिन का कोड है? हाँ गेंशिन का कोड है। क्या मिला देख? मेरे को 60 प्रीमो मिले हैं, और ये मटेरियल मिले हैं कुछ, 5 खाना मिला है, 10 हीरोज बिट्स और 100,000 मोरा। इसमें जो वर्थ है कोई तो वो उसका है प्रीमो का। ये ओसिया ब्लॉक क्या है भाई? There's no need to exchange pleasantries. It's rather pathetic to force a conversation just to कोड मैंने डाल दिया। silence. नहीं बीटी को ऐसे ही बोल रहा, चेक करने मिलेगा तो। ओह, मेरे ख्याल से एक कोड ही एक ही जगह लगता है। मैं अपने अकाउंट में करूंगा तो वेस्ट ही था करके मैंने बोला जो खेलता है उसको दे देता हूं। अरे अभिषेक आज 7:30 को मैच है, खेलेगा? अरे मैं नहीं खेल पाऊंगा, मुझे तो काम है। ये सोमा को बुला लेना। अरे मेरे को खुद उसके बाद फोन नहीं देगा पे। एक ही मैच खेल के निकलना है, बस एक मैच खेल के फटफट निकलना है। अरे तो एक मैच की बात थोड़ी ना है भाई। ये ओशिया ब्लॉक क्या है? ओशिया ब्लॉक क्या है? क्या सीन है, नहीं खेल पाएगा? नहीं नहीं, तो है ही नहीं अवेलेबल। ये तैरने का मस्त है रे। अच्छा बनाया उन लोगों ने। वैसे अंडर वाटर स्विमिंग आ गई। कौन करेगा? क्या आ गई? अंडर वाटर स्विमिंग मतलब डाइविंग जिसे बोल सकते हो। एक मैच में नहीं खेल पाएगा क्या अभिषेक? एक मैच फटफट के लिए खत्म कर देंगे ना अपन, जल्दी जल्दी एंड करेंगे। टाइम वो होगा ना जो है, पता नहीं मेरे पास, मैं लगे खेल पाऊंगा कि नहीं, बस बात वो है। देख 7:30 अपन बोल कुरामा को बोल के देखते हैं कि अपना मैच जल्दी कर लेंगे। 7:30 पे मैं नहीं फ्री हूँ। अरे तो मैं देखता हूँ कुछ कर सकता हूँ। Swan Fury. ये अंडर वाटर क्या मारा मारी भी कर सकता है क्या? हाँ और क्या, मछलियों से पावर लेके उनकी एबिलिटी यूज कर सकता है। पानी में सांस ले सकते हैं क्या? पानी में सांस ले सकते हैं ठीक है। हाँ बहू भी ले सकते। मैं वो वाला सांस की बात नहीं कर रहा। मस्त बना है वे ये। अरे वो क्या ड्रॉप करता है फिश? सामान। नहीं करना है भाई कोई भी क्वेस्ट,
नया वाला बॉस मारा बेटे? दोनों मारे बॉस कि नहीं मारे नए वाले? किधर है वो बॉस? दोनों मारोगे तुमको 50 प्रीमो मिलेंगे, पता है? वो तो अचीवमेंट रहेगा ना। अचीवमेंट नहीं, तेरा वो जो इवेंट आया हुआ है, तेरे इवेंट्स में देखना, जितनी भी नई चीजें आई है ना, वो तेरे को करने पे तेरे को प्रीमोस मिलेंगे 25-25। तो वो अरे बॉस यही में क्या बॉस है? क्या वो मैप में है वो? हाँ वही है। तो वो बॉस में क्या है कि उसके टोटल 2 टाइप के मोड हैं, तो उससे चूज कर सकता है तेरे को कौन सा रिवॉर्ड चाहिए। ठीक है, तेरे को दोनों मारना है क्या एक एक बार। देता क्या है वो? देता क्या मतलब, बॉस है तुम्हारा नॉर्मल जो बॉस होता है, जैसे जैसे हाइपोस्टेसिस है। वही कैरेक्टर वाला वो। हाँ वही, लेकिन वो एक नहीं टोटल 2 आइटम दे देता है, ठीक है ना? तो तुम्हें चूज करना होता है कौन सा आइटम तुमको चाहिए, पहले ही चूज करना होता है उसको मारने से पहले। तो दोनों का क्या कहते हैं, फाइटिंग स्टाइल चेंज हो जाता है। चलो मैं मतलब बंद 2 करता हूँ। कैरेक्टर के अलग अलग आइटम मिलेंगे। ओए अभिषेक, एक मैच के लिए फ्री हो सकता है क्या? एक मैच के लिए? अरे एक मैच की बात नहीं है ना भाई, अगर मैं फ्री होता तो मैं और भी तक खेल सकता था, लेकिन वही है ना, फ्री नहीं हो तो एक मैच हो, चाहे 2 हो, चाहे 5 हो। क्या क्या काम है, कुछ बता सकता है? मुझे बाहर जाना है। क्या क्या करना है बाहर जाके? पता नहीं है, देखो भी जाके पता चलेगा। वो काम तू पहले कर सकता है अभी? नहीं मतलब नहीं, पहले नहीं कर सकता। चलो भाई, हो गया मेरा गेंशिन।